morning, students. Today we learn more about life processes, especially respiration. What is respiration? Well, it is both a chemical as well as a physical process. Chemical in the sense that glucose breaks down to produce energy in the presence or absence of oxygen. It occurs in the cells of living organisms, where energy is produced and is used to make ATP molecules. This helps to drive endothermic reactions. Respiration in humans involves both external respiration, that is breathing, and internal respiration, that is energy release, that is occurring at the cellular level. The food material that is taken in during the process of nutrition is used in the cells to provide energy for the various life processes. The process varies in organisms. In some, there is the use of oxygen and glucose. The oxygen breaks down the glucose completely to form carbon dioxide and water. In some organisms, they use other pathways that do not involve oxygen. In all the cases, the first step is the breakdown of glucose into which is a 6 carbon molecule into pyruvate, a 3 carbon molecule. This occurs in the cytoplasm. In yeast, the pyruvate is converted into ethanol and carbon dioxide. This process takes place in yeast during fermentation. This process occurs in the absence of oxygen and is called anaerobic respiration. Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria. The process breaks down the 3 carbon pyruvate molecule to give the 3 molecules of carbon dioxide. The other product is water. Since the process takes place in the presence of air, it is called as aerobic respiration. The release of energy in aerobic process is a lot greater than that in anaerobic process. Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for breakdown of pyruvate is taken and pyruvate is converted to lactic acid, which is a 3 carbon molecule. The buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity causes muscular cramps. Now we can have a summary. This is a representation of the pathways of glucose. Here you can see glucose is being broken down to produce pyruvate. This is taking place in the cytoplasm. Pyruvate is a 3 carbon molecule. Energy is released here. After this, you can see there are 3 different pathways. The first one is in the absence of oxygen, anaerobic respiration. This occurs in yeast. And what do they form? Ethanol, C2H5OH, carbon dioxide and energy. Ethanol is a 2 carbon molecule. Other one is lack of oxygen that is occurring in our muscle cells. Lactic acid, a 3 carbon molecule, and energy is released. Presence of oxygen that is going to be occurring in the mitochondria, and the pyruvate is broken down to form carbon dioxide, water and energy. That is aerobic respiration. So the energy released during cellular respiration immediately is used to synthesize another molecule. यानी जो भी आपका एनर्जी प्रोड्यूस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन द्वारा, उसमें वो एनर्जी एक मॉलिक्यूल बनाने में यूज अप होता है और वो मॉलिक्यूल होता है एटीपी. एटीपी इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल. सेल के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है जो ये एटीपी फुलफिल करता है. ATP is broken down during the rise to form, which is going to give rise to a fixed amount of energy
which can drive the endothermic reactions taking place in the cell. तो ATP का breakdown होता है, वो एक certain amount of energy release करता है and ये इस्तेमाल होता है काफ़ी endothermic reactions के लिए. अब देखिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे हम ATP कहते हैं is the energy currency for the most of the cellular process. Energy released during the process of respiration is used to make a ATP molecule. तो एक ATP molecule बनाने के लिए एनर्जी प्रोसेस, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो यूज़अप होती है. इसमें अगर आप देखेंगे एक ATP है, ADP है, दैट इज़ एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है और इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, जो एनर्जी रिलीज हुई थी सेल्यूलर रेस्पिरेशन में. तो ये ADP इसके साथ ज्वाइन करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में और एक ATP मॉलिक्यूल बनाता है. अब ये क्या होता है, ATP मॉलिक्यूल एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज द ATP टू ड्राइव द रिएक्शंस. व्हेन द terminal phosphate linkage in ATP is broken down using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole is going to be released. ATP can now be used in the cells for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nervous impulses and many other activities. Aerobic respiration pathway depends on oxygen. Aerobic organisms need to ensure that there is sufficient amount of intake of oxygen. Plants में क्या होता है, exchange of gases होती है और आपको मालूम है ये स्टोमेटा पे होता है. स्टोमेटा से एयर अंदर जाए और हर सेल को मिले, इसके लिए इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होती हैं ताकि गैसेस है डिफ्यूजन द्वारा हर एक सेल के कांटेक्ट में आता है और एक्सचेंज हो जाती है. द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन. द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट. रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन होते रहता है. कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्टिविटी. During the day, carbon dioxide generated during respiration is used up for photosynthesis. Hence, there is no carbon dioxide released. Instead, oxygen release is the major event at this time. यानी डे टाइम में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है बट वो प्लांट ले लेता है और प्लांट लेने के बाद में वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ अप करने के बाद में वो इस्तेमाल हो जाता है. तो एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हुए नहीं दिखता है बट ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस द्वारा रिलीज होते रहते हैं. एनिमल्स दैट इवॉल्व्ड different organs for the uptake of oxygen from the environment and getting rid of carbon dioxide produced. Terrestrial animals breathe the oxygen in the atmosphere, but aquatic animals में क्या होता है, वो निर्भर करते हैं सिर्फ और सिर्फ वो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है पानी में. क्योंकि ये डिजॉल्व ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है तो ये इनका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है एक्वाटिक एनिमल्स की वो फास्टर रहती है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. अब देखते फिशेस के बारे में आपने क्लास 7th में भी पढ़ा था. इनके पास खास ऑर्गन होता है जिसको हम गिल्स कहते हैं. फिश क्या करते हैं, दे टेक अप द वाटर containing oxygen from the mouth and they force it through the gills where the oxygen will be, the dissolved oxygen is taken up by the blood. अब अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल यानी वो जो लैंड में रहते हैं वो निर्भर करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स. जो भी हैं ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये दे आर मेंट फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स इसके कांटेक्ट में रहेंगे. द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टेक्स प्लेस अक्रॉस द सरफेस. हैंस द सरफेस नीड्स टू बी
थिन एंड डेलिकेट। तो ये पतला रहना चाहिए क्योंकि डिफ्यूजन द्वारा इसमें से आना जाना बना रहेगा, तो ये टिश्यू को पतला रहना चाहिए। दिस सरफेस हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड, इस सरफेस को भी प्रोटेक्टेड होने चाहिए, इसलिए वो एक खास जगह पे रहता है और इस खास जगह तक ऑक्सीजन है को पहुंचना, एयर को पहुंचना, उसके लिए एक पैसेज होता है और ये पैसेज ट्यूब्स के द्वारा वहाँ तक पहुँच जाता है। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स के थ्रू, नाक के थ्रू ये पहुँचता है। एयर पासिस थ्रू द नॉस्ट्रल्स एंड इट इज फिल्टर्ड देयर बाय द फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। पैसेज में म्यूकस भी होता है, दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस। एयर यहाँ से पास होकर थ्रोट में जाता है और फिर लंग्स में। यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, जो ट्रेकिया के पोर्शन में होता है, वहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं और ये इंश्योर करते कि एयर पैसेज कोलैप्स ना करे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं नेसल पैसेज, दिस इज गोइंग इनटू द pharynx, from there the larynx, then the trachea, the rings of the cartilage you can see over here. This is passing, this passage is going to the bronchus, क्योंकि लेफ्ट और राइट लंग्स होते हैं तो लेफ्ट और राइट ब्रोंकस भी होता है और उसका प्लूरल फॉर्म हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करता है, ब्रोंक्यूल्स बनाता है एंड दिस गोज इनटू द एल्वियुलर सैक। Within the lungs, the passage divides into smaller tubes, the bronchi, which further divides into smaller and smaller tubes called the bronchioles. और bronchioles then end up in the alveoli. एक sac-like structure होता है, balloon-like structure होता है, जिसको alveolar sac कहते हैं। Alveolar sac में एक खासियत होती है कि इनके surface पे blood vessels लगे हुए रहते हैं ताकि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज टेक प्लेस कर सके। When we breathe out, the ribs move up and outwards. The diaphragm flattens, the chest cavity increases the volume, and the pressure decreases. The atmospheric pressure inside of the lungs is lowered as compared to the atmospheric pressure, hence the air rushes in. It moves according to the pressure gradient. Now, what happens here in the alveolar sac? The oxygen concentration present in the alveolus is more than that of the blood in the blood vessel. Hence, the oxygen moves in to the blood vessel into the blood via diffusion. That is moving according to the pressure gradient. On the other hand, the concentration of carbon dioxide present in the blood that is coming from the organs coming to the lungs is going to be rich in carbon dioxide. Now, as this happens, carbon dioxide is now going to move from the blood vessel into the alveolar space, that is the alveolar sac. Hence, carbon dioxide diffuses out into the alveoli. Now, from here, what will happen? Exhalation will take place. Inhalation process को अभी मैंने बताया, जिसमें air is sucked in. This is because the ribs move up and outward, diaphragm moves down, causing the increase in the chest cavity. Lungs, the volume increases, the pressure decreases, and the air from outside comes in. During exhalation, the reverse takes place. The ribs move inward and downward, diaphragm moves back to its original position, the chest cavity decreases in size, the lungs now have increased pressure and the air moves out. This is just explained over here, as you can see. So we do not actually force the breathing. The breathing process will take place according to the pressure gradient. So let us sum it up. We can have in inhalation, the ribs move outward, upward, diaphragm moves down, increase in the volume of the lungs, pressure decreases, air moves in. During exhalation,
the reverse takes place. The exhalation, the lung capacity decreases. This is because of the fact that the ribs move back to their original position, diaphragm moves back, there is less volume and there is increased pressure. Now the air moves out. So in the breathing cycle, the air taken in and out, the lungs always contain a certain residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed, for the carbon dioxide to be released. When the body size of animals is large, like in case of humans, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery. We need certain pigments, and you know that these pigments in case of humans, this respiratory pigment that is in humans is called as hemoglobin. Oxygen has got a very high affinity for hemoglobin has got a very high affinity for oxygen, and therefore the transport of oxygen takes place via the hemoglobin. However, carbon dioxide is soluble in water, and compared to oxygen, it is transported in the dissolved state, in the dissolved form in our blood. Thank you so much.